Did you try this? I tried it. Very This is nice. Arabic कितना perfume, फोटो guys. चाहिए I पीछे जाओ asked पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ दादा Ahmed. दादा Emma, which one you giving me? Yeah, that's the थोड़ा best. साइड हो जाओ ना यार तुम आ जाओ Giving me लाइट को बॉम्ब मार उन्होंने मुझे बोला है मुझ पे कम कर लाइट सुन मैं ये ले रही हूँ। ठीक कौन सा दिखा दो मुझे अरे ये मेरा ताकि बता सके बाद में ना बर्थडे बर्थडे Which one इसका from you? मुझे इसके लिए गिफ्ट लाना चाहिए मैं तो रिटर्न गिफ्ट लेके जा रही हूँ। अलग जी एक साथ में फोटो करते मैम हैं एक साथ में फोटो मैम सनत जी सही सही एक अच्छा है तो फोटो करते हैं ना आप सब बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे यार बहुत क्या ये है दोस्ती अलग जी था दोनों How many cakes do you have, Ahmed? द सेंटर I want to meet your brother. Come, hi. Hi, I'm Sana. So nice to meet you. I always wanted to meet you. एक I साथ tell में you थे। bye. Bye. Done? एक मिनट डन चल चलो डन थैंक यू थैंक यू Thank you. बस करो यार ठीक है ना? Just do it. And Bloody Ishq is there, guys. Go and watch it. Please watch it. It's Please with watch Avika. She's also a good friend, but she couldn't make it Oh, today. really? She is- Wow. Yeah. Oh, yeah, she's not here. Yeah, yeah. She's not here. A lot of people are not here, by the way. But yes, you I did it. said, even though I'm shooting, I have to come here for my brother. First of all, happy birthday Thank you so to much, this bro. darling brother of mine who's one of the most amazing people I know, most creative. The most entertaining person on Instagram, the man here. And the way he makes us artists feel, how special he makes us feel, it's just something so special. So he's a brother, he's a very dear friend, and I wish him a lifetime of success and all the greatest things, great health, and of course wealth I don't need to pray for, he's already making too much money. Hi Allah. I don't know. But thank you so much for coming. I still remember that My when I honor. met Vardan for the first time, he was such a genuine, such a calm person. And I have told him that you will, inshallah, reach very high. And you are reaching. And you will reach, inshallah. Thank you. It's And your you guys love and your support him blessings. a lot. Yeah, thank you. They're lovely. They, का सक्सेस हमने देखा सेंटा में आगे का सहयोग देखा इसी के साथ आगे क्या अपकमिंग क्या क्या बनाना चाहिए? बताना चाहेंगे व्हाट इज इन अ पाइपलाइन What is in the pipeline here? There are a few really exciting things, but I'm not allowed to talk about it. As I said, there is a thriller, there's a drama, there's a comedy. I'm working on also a love story, in fact. There's something, all these things I'll be shooting soon. I just got back from the UK, I was shooting for a film. But जैसे जैसे वक्त सही होगा हम ऑफिशियली बात कर पाएंगे तो और मज़ा आएगा बोलने में पर yeah, the idea is just to do really amazing characters, different characters different from who Vardhan is as a person, and to make my family and my dear friends like Ahmad proud always. That's the dream, right? We are proud of you. Thank you, Vardan. thank We are you. proud. जी उनको हमेशा याद किया जाता है हर पल याद किया जाता है बट ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो आप हमेशा अपने दादू को याद करते हो और आप कुछ भी करते हो ऐसे याद आता है कि दादू मेरे साथ थे जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे मेरे दादू याद आते हैं तो ऐसा कोई पल नहीं होता जब मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है अब मैं He's मेरे a भाई gen- के साथ he's a खड़ा हूँ legendary- Yeah, legendary मेरे भाई के साथ खड़ा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरे दादू दादी नाना नानी सब मेरे इर्द गिर्द ही है आई कैन ऑलवेज फील द एनर्जी सो आई हैव सम फैबुलस मेमोरीज और उन मेमोरीज के सहारे उन यादों के सहारे मैं मुस्कुराता हूँ खुश रहता हूँ और बस एक ही चाह है प्यार दूँ प्यार लूँ और क्या है ज़िंदगी में True. Thank you so much. Thank you. Have a great evening, guys. Yeah, let's take a picture. Okay.
Thank you so much. Yeah. हाथ आ रहा है किसका ये पता है? आएगा काट दो। ये साइड आ जाओ ना, ये साइड सर, ये साइड हो गया। Thank you so much, brother. Thank you so much for coming, and thank you so much for coming as well. Treating you. It's beautiful. I'm loving the weather. Very Is it? I know it's raining in this one because in Remember Dubai I we told don't you the find- last time What? that come on a better month. Monsoon. Yeah. Monsoon. Thank you so much. Loving Guys, Mumbai? I'm loving this beautiful people. I Thank have you. done their interview since very long time. I think we know each other from like past three years. Yes. Yeah. And the show has been dubbed in Arabic in one of the Middle East. It has been hugely successful. One of the best shows in Arabic has been dubbed. And you went to one of the biggest shows. Yeah. And how did he do? Very honestly, in the show. In Big Boss? Yes. Did well. Did well. The fact that Fantastic, he it came was a out with all his fantastic journey. dignity and Yes, I told also. Yeah. He was very dignified. he did well. But he's very short-tempered guy. That I didn't notice that when I met him for the first time. That But is, last that time when I is. came to Yeah. Mumbai, guys, they treated me very well. They We took me have to one to- of the best restaurants. Yeah. Indian food. I tried the In original. South Bombay, you love that food. Eh? Yeah. But thank you so much, guys. I have to teach you guys one Arabic word. Arabic Right? word? Okay, let's go. So what do you guys want me to teach them something in Arabic? What do you guys say? आपको कॉम्प्लीमेंट भी दूंगे नए लुक पे मुस्टैक एंड ऑल Ah, Wasim. He's looking Wasim. Wasim means Wasim. handsome. What's Wasim? Handsome. Oh wow, Wasim. He's looking. Upcoming projects. No, this one you ask me. About upcoming projects. आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना सब यही पूछेंगे But I will ask, why is this new look? What's happening? So because my new role is a cop, I'm doing a web show and there's a cop role in that. So that's why I'm carrying this look for that. Are both of you in the one? Yes, we both are playing together. भाई आपको अभी तक कितने लोगों ने सलाम किया सच बताइए मैंने देखा ना एक्चुअली शायद किया होगा आपने भी तो मुझे बोला था कि यू लुक लाइक अ कॉप ऑफ कोर्स दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू एन एक्टर दैट इफ आई एम लुकिंग इन दैट कैरेक्टर थैंक यू सो मच आप सबकी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा अपनी गर्ल जब कोई कॉम्प्लीमेंट को ज्यादा प्यार करता है आपका क्या कॉम्प्लीमेंट है इनको इस लुक में है मैंने एक्चुअली पहली बार ये लुक मैंने मेंटेन किया है हाँ मतलब मैंने This is the first time एक बार I was. क्लीन शेव देखा था तब मैं डर गई थी बट दिस इज बेटर लाइक मूछे होनी चाहिए मुझे होनी चाहिए तो आपकी जैसी ओहो Mucho bari admi. Thank you so much, guys. Thank Just take you. one थैंक यू यस You want to take a yeah. थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू We have the beautiful, Oh, happy birthday! the beautiful, the gorgeous Jyotika. And congratulations for your new song. Thank you. How does it feel? It feels amazing and it feels so amazing to see you here celebrating your शुक्रिया। birthday, special day with us. बहुत शुक्रिया मुझे बहुत खुशी हुई आज. क्या बात है? And almost same. No, it's not same. It's Not- not same. It's not same. Huh? Camera look. Oh, okay. What do we camera look? I had to look in camera. And I don't look at her. I talk with her like this one. No, don't make him look into the camera. Let him look at me. But thank you so much for coming. And do you want to sing for all of us one line of your new song? Sure. Yalla guys, she will sing one Okay. line. So it's a Punjabi song for my own label. So you keep like teaching us Arabic. So I'll ask you later if you understand any of the Punjabi songs. Oh nice. Okay. Chalo. ਸਖੀਆਂ ਚ ਛਿੜੀ ਤਕਰਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਤੂੰ ਇੰਦ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਤਬਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ मैंने भी उसे पसंद कर दिया I understand everything क्या बात Punjabi not too much I am going through it but you're good huh In Arabic, amazing. amazing in Arabic means روعة Rawa روعة means like amazing perfect and you're Okay. looking like a روعة thank you see nobody can see me though because I'm so short for this you're not short you're very good you're very good يلا yeah okay thank you let's take one picture it's okay come where's our camera guy he's always everywhere Yes, yes. Thank you, thank you. Yep. So firstly आप लोगों को साथ में काफी टाइम के बाद Yes. यस एक्चुअली यार हमारे टाइम्स कभी मैच होते नहीं हैं एंड आज स्पेशली अहमद वाज आई वांट टू मीट अहमद सो बैडली एंड हम लोगों का बहुत टाइम से प्लान था बट ही वाज नॉट प्लानिंग इट आउट प्रॉपर्ली सो आज मैनेज हो गया किसी तरह से टाइम निकल गया तो वी केम अलॉन्ग एंड वी बोथ वर शूटिंग सो टाइम निकल गया थोड़ा लेट भी हो गए आते आते एक्चुअली या यार अभी आज सीरियसली आई एम ही इज सच एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड बट अभी तक ही इज़ हियर एंड अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है सो इट्स इज सच अ लवली पर्सन एंड आई विश हिम ऑल द लव एंड ऑल द लव एंड हैप्पीनेस Happy birthday to Emma then, yeah. All the love and success. Thank you. Okay. two beautiful people what should I teach them in Arabic he's always tell them like I know. But you know that I am good with Arabic, so we have done a lot of sessions with Arabic, he's very good does she know Arabic No, not the least idea. It's her turn now. It's her turn now. okay what do you want me to tell her in Arabic So you tell her that she is looking Jama. Just tell her she is looking Jamila. okay you're looking Jamila it's I know it's not a good Jamila. thing it's not a good thing I Yeah, know but you have said it in front of media, right? yeah Jamila means Yeah. beautiful you're looking beautiful And how do you say mashallah thank you in Arabic? shukran Shukran. shukran and you can tell them you're looking waseem Yeah. you're looking handsome Waseem. See, na? Waseem. Oh no, I have no idea about Arabic. I will teach you Arabic, but Yeah. I think I know Zain since very, very, very long time. Exactly. Since the first show came, Yeah. and the show was one of the biggest hits dubbed in Arabic. Dubbed in Arabic, yeah. And since that, he had such a fan following, and then he progressed himself, mashallah, Very, thank to you so much. huge. And they have done a show together, and that was also huge. And Yeah. I'm very happy that you guys are here. Thank you so I'm much. so बहुत happy. शुक्रिया मुझे बहुत खुशी हुई. Oh my God. Same here. It was lovely meeting How you. sweet. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. I Thank think you. now we will cut the cake. Cool. Yeah. Let's go. And just take pictures and then. Yep. Okay. Cake. Yep. Yeah.
मोबाइल पैसे करके नहीं चलो How have you been? Seeing your posts and everything. Thank you so much. So I saw your new music album also. Sorry? अभी खुद की आवाज में आ रहा है. You guys have to support me. I make photo. Of course, come. Thank you. Thank you so much. Okay. So when that hit, When you come here, that lady here actually. She's the बस हो गया ना? मतलब नाम मेरे पसंद है. साई केतन राव. मतलब मेरे नाम से भी ज्यादा भारी है. सना सुल्तान. इनका भी शिवांगी. ये बताओ how is my new look? Wait. I think you did see my new look, right? The show. चलो. मतलब मुझे ये बिग बॉस वाला साइड नहीं लग रहा है. बहुत ईमानदारी से बोलो. कुछ मुख्तलिफ लग रहा है. बट नाइस. कुछ मुख्तलिफ. कितने टाइम का है? पीछे का टेबल मुंह पे ना बेटा. okay. कोऑर्डिनेट नहीं होगा. Okay, okay, done. Blow. Then you say 1, 2, 3 turn. Okay, done. Because blow, he's on the but turn it. खराब करके Oh my God. See, that's very क्या कर रहे हो? लाइट दिखाओ. अच्छा चलो मैं लाइट बैटरी लगाने जाता हूँ लेकिन आगे लगा अरे कसम से बैटरी जेब में. क्या कर रहे हो यार आप भी? हाँ तो इसके लाइट पे तुम अच्छा फुटेज थोड़ा ना पा सकते हो. वो मेरे कैमरा में है, मैं बढ़ा लूँगा. ठीक है? हाँ देख लो, बिना लाइट का भी अच्छा आ रहा है. अरे मेरा हेलो सर मैं फोटो कर देना. कोई लाइट थोड़ा 1 मिनट कोई लाइट नहीं लगा रहा गरीब को. अरे मेरा लाइट जल नहीं देगा ना. कौन है भाई पीछे? All guys give the back. Okay? So once I will blow the candle, they will tell you 3, 2, 1, turn. Then you turn, make a pose. Yes. Nice? You have to make a pose of face. Okay, come now. How will? Okay. छोटा पोज करना पड़ेगा. I wanted it. Okay. मकबूल सर. सुल्तान के पास. You can hide me. I will do like this. You 1, 2, 3, 4. Somebody is doing it. I should sit in the chair. Listen, guys, start. Okay, chalo. Chalo, let's go. Done. We light the candle. Meher. Okay, guys, little bit because my Meher. ये उधर सेकंड है पीछे. No, shoot, then we light the candle. Yeah, just light the candle. Yeah, Come on. So. थोड़ा और पीछे आ जा. पीछे Okay, for real. Okay, give us the count like 1. Happy Ready? Let's go. Yalla guys, turn. Yalla. Ready? No, I'm blowing. No. One pulling it, turn करना. Okay. Once you will hear blow, I will blow. 3, 2, 1, then you will turn. Okay. Full
full back. Okay, ready? My cameraman, you say start. Yeah. Silence and blow. One. Okay, let's cut the cake. And 3, 2, 1. Okay, I don't know how to cut the cake, but she's please hurry. Okay, I don't know, guys. I'm not so good at cake cutting, but I'm very good at cake eating. I will eat my own cake. Who did this? Ma'am, hello. Yeah, maybe it's okay. Yeah. 3, 2, 1. This one, okay, like she left everything and she's eating jelly. But thank you so much, guys, for coming. बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट in Arabic. Guys, 1 minute. Jyotika, she have a good song launched. She will sing for us one line. Please. Which one? The new one? Yeah. Okay. Chalo. Chalo, I'll sing for you. Asha, you sing that song. Hold it. We'll make a mashup. Yeah, my new song. Chalo. Silence. ओ सखियां च छिड़ी तकरार सोहणिया जिद्दां दा तू कीता इज़हार सोहणिया इश्क तेरे ने मैनू कीता कमली तू ही दसदा ऐ अंदर ते बाहर सोहणिया चन्न नाल सोहणा मुंडा सौ रब दी चन्न नाल सोहणा मुंडा सौ रब दी नी मैं दिल विच बंद कर लिया आए जी दे उत्ते मरदी आ लखां कुड़ियां नी मैनू उसने पसंद कर लिया ये थैंक यू जी दे उत्ते मरदी आ लखां कुड़ियां नी मैनू उसने पसंद कर लिया Oh, thank you. Now we have Sudhir. Sudhir also. Thank you so much, bro. Thank you so much. He is such a best singer. I have met him in The Voice, and I have taken his interview, and I told him, please, bro, come to my birthday. Please sing your song from the movie Kill, that you have killed the song. Please. Floor is yours. सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Of course. और पहली बार ही हम लोग मिल रहे हैं. First time. निकालो. दवा इधर. हाँ. काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा कीवें कट्टा मेरे यारा कीवें कट्टा मेरे यारा तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा कीवें कट्टा मेरे यारा कीवें कट्टा मेरे यारा तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू हर जुल्म सी तेरे लिए हर सितम नू हर जुल्म सीने ते ले जावा सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा कावा मैं सुन कावा मैं किथों साथ जाएंगे कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा
मैंने बोला पाजी से पूछ लो यार काटे काम कर रहे हो अरे भाई चले चलो पलक जी एक दूसरे को खिलाइए हाँ आइए सना जी खिलाइए ना चाहिए आपको आप दोनों खाइए नहीं आप लोग सलमान को खाना सलमान खाना मैं तो केक पसंद है लगता सना जी को बहुत ज्यादा ना आगे बढ़ जाओ सदा भाई चलो चलो हो गया ना भाई समीरा थोड़ा पीछे हो जा Makes sense. Okay guys, yalla. Roll. पाजी उनका बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिस करना चाहिए इसके बाद हम आएंगे बात हम लोग मिले थे पैंडमिक के समय पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारा रूबरू हुए थे हम एक इंटरव्यू में जहाँ पे मैंने उनको कुछ बातें हुई थी, कुछ गा के सुनाया था। तब से हम लोग कनेक्टेड हैं और लगातार हमारी बीच बीच में बातें होती हैं, लेकिन कभी बिल्कुल सामने सामने मिलने का ना मौका नहीं मिला। और आज वो खास दिन है, खास दिन दो तरीके से कि मैं इनसे मिल रहा हूँ और आज इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मेरे दिल से, हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अहमद भाई। Thank you so much bro for coming and I'm so very happy that you came। तुम आज आए यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हुई। And the song he sang, he made the floor shaky। Kawa means in Arabic غراب. So you want to sing one line for a different song maybe? हाँ, definitely yes. One more song. Shabu, I love Sufi Shabu, song for you. चलो। Okay. किसे दा यार ना परदेस जावे व छोड़ा ना किसे दे पेश आवे सानू एक पल चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना हो दिल जाने क्यों घबरावे सजना तेरे बिना अहमद तेरे बिना। I love that. Thank you so much. I really love his voice. He is such a nice. Every video he makes, it's like different. And Dharma production, that really means a lot. Definitely. Thank you so much, Sudhir, for coming here. Thank you. बहुत शुक्रिया. Let's take. सी मैं कभी भी मेलो गाने पसंद नहीं करता। मुझे जैसा कि भाई ने कहा कि ऑल पावरफुल सॉन्ग्स, ऑल द टाइटल ट्रैक्स, मतलब जिस तरह के गाने, एनर्जेटिक गाने, वही मैं गाना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा विश नहीं करता, बाकी सब मैं अगर मुझे मिलेंगे तो मैं गाऊँगा, लेकिन मेरी विश यही है कि 10 सबसे पावरफुल जो गाने बॉलीवुड के वो मैं गाऊँ। Thank you so much. थैंक यू। Chachu also was very drama. Yalla guys. First of all, thank you so much, Vivian, for coming. Really means a lot. And I'm so happy that I have met you, not only here, I have met you
outside also. Yeah. And he's such a genuine person, and I really loved the way he speaks, the way he respects people. That really means a lot. And I have met family members of Vivian, and they were so very accommodating, so very lovely. And I'm very happy for you, Vivian. Thank you so much. Thank you so much. Most welcome. What do you want to say to them, to the people that were waiting for you? So, thank you so much for having me here. Of course, always. And Ahmed has always been a lovely friend, and I think I'm the only actor he knows from Dubai, not from Mumbai. Yes. So yeah, and of course he's an old friend, and we've done some great work together. Yes. And hopefully in future also we will do. And Inshallah. Inshallah, and I wish you all the best for the coming year. Thank you so much, brother. Lots It of really love. means a lot. This mic always dropping. Whose mic is this? इनका फर्स्ट पहली बार मुंबई में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है जी। ये कितना स्पेशल है इनके लिए और आगे चल के आपको भी See, first of all, guys, a little silence, please. Okay? Thank you very much. हाँ, दोबारा पूछिए. सर फर्स्ट टाइम मुंबई में सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई में तो काफी बार किए इस बार आप लोगों के साथ यहाँ कितना स्पेशल होना है कितना बड़ा सेलिब्रेशन होना है I think he's already an extended family for us, and as he's always been, and in fact he's come to Bahrain also, and we've met in Bahrain also. So I think it's always special to have him here, birthday not birthday, and I think all the more, you know, his birthday, it adds a lot to the occasion. It's an icing on the cake. Yeah, it's an icing on the cake. Yeah. Okay, now tell them what Arabic word you know. Kathir. Kathir. Kathir means money. Money, too much. Kathir. Now you have a new word to learn, huh? Money मत समझना, many. Money नहीं. Money नहीं. Money is loose. सो व्हाट इज इन योर पाइपलाइन सर क्या कुछ नया और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा आपकी तरफ से मेरी तरफ से वो तो आप लोग बताते हो ना क्या आ रहा है नया मेरा. Oh, they have decided. Where is that guy who told me October? Where is he? He left. तो मतलब कुछ स्पेशल आने वाला है इनकी तरफ से अक्टूबर में I don't know who have given this news that something coming out in October for me. Yeah. I don't know. They're saying. So it's okay if they're saying we'll bring something out in October. Oh yeah. Inshallah we can do We that. can make a new reel together. Yeah, not a problem. He wants the answer. वो कह रहे हैं कि ये शादी भी हो सकती है बिग बॉस में भी जा सकते हैं आप कितना एक्साइटेड हैं उनको ये दोनों करते थे इन दोनों को सुन के तू इतना क्यों खुश हो रहा है? वो हम तो एक्साइटेड होंगे अपने दोस्त के लिए, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? खबर है कौन जाने वाला है इसीलिए हम कंफर्म कर रहे हैं कुछ रेलेवेंट सवाल पूछना दोस्त. सर ये जो सोशल मीडिया हो गई है जी. सोशल मीडिया का दौर काफी ज्यादा बढ़ गया है जी. ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में I think social media has become an integral part of every actor's life today. Everyone. Everybody's, not only an actor, you know, Entrepreneur, entrepreneurs, influencer, and I think social media is very important, you know, especially in today's time. And I think it plays a very important role in your profession as well. सर आपके हिसाब से भविष्य कितना ज़्यादा होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ क्योंकि कुछ इंसिडेंट इस समय हम लोगों ने इस तरह के देखे जो होना नहीं चाहिए था खासकर भारत First of all, there's so much noise that I can't hear you clearly. And second of all, ask me questions relevant to us. He's here. मतलब मेरा इंटरव्यू तुझे मिल जाएगा. हाँ. All right? We good? So. Thank you so much, Vivian. Thank you so much, guys, Come, and let's go inside. thank you so much. Lots of love. Thank you. मैम सेंटर में आना जी आज अहमद जी का बर्थडे आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं मेरे तरफ से उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो अपने काम को हमेशा ऐसे बरकरार रखें और हमेशा अच्छा काम करें और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा बहुत स्वीटली जब भी मैं दुबई जाती हूँ हमेशा मिलते हैं. सो इट्स इम्पेरेटिव कि उनकी बर्थडे पर मैं आकर उनको विश करूँ. फर्स्ट टाइम मुंबई में सेलिब्रेट हो रहा है कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन
so sweet of him to come and select Bombay. Actually यहाँ पर वो इतने इंटरव्यूज़ करते हैं, वो इतने सारे आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट्स को जानते हैं. I think he has a great reach, and I think this is a great place that he could have selected his birthday destination. Thank you so much. On your left hand. नहीं आप पीछे होकर फोटो लो ना थोड़ा. हाइट लेनी थोड़ी सी और आगे कितना हाइट लेगा. ओके ओके थैंक यू मैम. First of all, thank you very much. First of all, thank you very much for inviting me here on this beautiful celebration, like you said. And I think I'm really excited because I'm going to meet Ahmed for the first time, and I'm really looking forward to this event. As me and Ahmed, we had a great conversation, and he has always supported my work till now. So I would like to share and send my supporting energy to him as well. Great. Thank you so much. Thank you. तुम्ही एडिट करून छान घातलं होतं, बदल घालायचा आणि पोस्ट करणार. हां एक बिना प्रमोशन दनीशा को इधर राइट में आपके थैंक यू. बस किती जर बघणार एकच माणसाला. इकडे बघा. रेडी दोन प्रवेश He's a good friend. It's his birthday today. Yeah. Very good. You're all very good. Same. Okay, what should we see? Today I will try to speak in Hindi. Huh? So excuse my Hindi. Yeah. अच्छा क्या बोलूँ हिंदी में? आप सबका बहुत धन्यवाद. आप मेरे जन्मदिन पर आए. Okay. Okay, I will say what I practice. Okay. बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर आए मेरे बर्थडे में, मेरे जन्मदिन में. और मैं हर साल दुबई में मनाता हूँ, लेकिन आज मैं मुंबई में आया हूँ क्योंकि तुम सब इंडिया जब दुबई में आओगे शाइन करोगे मेरे कंट्री. So it's my turn to come to your country and shine your country. So that's why thank you. बहुत शुक्रिया. Nice my Hindi? Good. Brilliant. You literally sound like an Indian only. हाँ. दिखता भी इंडियन ही है पूरा. हाँ अगर पिछले जन्म में बादशाह देते भी कौन भी बादशाह. दुबई मिडिल ईस्ट बादशाह. मिडिल ईस्ट बादशाह. और है इंडिया. किधर देखो. You should do a namaste. नमस्ते भारत. I'm practicing for something special. I'm practicing for something special. Do I know it? I cannot say it's October. I don't know. I cannot say. Yes. Okay. So sir, we can buy some Hindi or English mix.
Let her throw. Let her say no. Then I will come. It's Bibika now. Baba, you come first. Okay. You will ask question, then I will answer. Listen. Or I don't know. I will tell you after. I cannot say in front I of know. media. Okay. What should we say? आज के लिए आपका दिन कितना खास है, आप इसे इंडिया मना रहे, क्या बोलना चाहिए? Okay, so first of all, I'm very happy कि मैं आज यहाँ पर हूँ इंडिया में, मुंबई में, मेरे जन्मदिन के लिए बेबिका के साथ, सब सेलिब्रिटीज़ जो मैंने इंटरव्यू किए उसके साथ, सब जो मेरे दोस्त थे आप सब के साथ, जो मैंने भी बोला था पहले कि सब इंडियंस दुबई में आते हैं, यूएई में आते हैं, हमारी कंट्री को शाइन करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है यूएई पर इमाराती अरब को यहाँ पर आए और यहाँ पर शाइन करें। और आप सब के लिए बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आप आए। Thank you. It was good, no? It was brilliant. I love how he's What should I say now? बर्थडे आपका सरप्राइज आप ही दे रहे हो, आपका नाम आ रहा है बिग बॉस 18 के लिए, क्या सच? अब बिग बॉस की रियलिटी शो में जा रहे हैं, क्या बताना चाहिए? Can't speak. कुछ सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रखते। No, वो कौन बताया कभी? कौन बताया? जो ऑडियंस है वो You said in October, na? They know the biggest show comes in October now. No, maybe it's different thing. Maybe it's a show in Dubai. कुछ और है, कुछ। क्या होने वाला अक्टूबर में, कुछ बता सकते हैं आप? क्या एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या नया आने वाला है? Don't dig more, he can't, ना? तो कुछ exciting होगा, extraordinary. Is it something for the first time you're doing? Yeah. जिंदगी में कुछ पहली बार है। बस कर मेरे भाई, नॉन डिस्क्लोजर होता है। पिटवाएगा। I want to see what I have done for Mammootty. You guys know Mammootty, no? Yeah. So I dubbed for a Mammootty film in Arabic. It is in cinemas now. It's running very successfully. Wow. That was my first experience. That's what I can say. जब अनाउंसमेंट की बात हो रही है, आपकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है? हाँ, tell them your new show. Yeah, I am coming up with an adventure show. It's coming on Discovery Plus OTT, Discovery Channel, and it would be on 23rd of September. तो आप सब प्लीज़, आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। मेरी ज़िंदगी का पहला एडवेंचर शो है और बहुत ख़तरनाक, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग शो था ये। हालत खस्ता हो गई। तो मैंने कभी एडवेंचरस चीज़ों में अपनी ज़िंदगी की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया नहीं है, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव डन दिस। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, कुछ चीज़ें आई हैव बीन मिजरेबली स्ट्रगलिंग, बट यू गाइज नीड टू सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू टेक him next year with me in that show. Adventure and me? No. I'll make him run between the mountains and the rivers like I did. I hate exercise. So do I, but I still did it. So this is something exciting. 2 more music videos and of course my movie Ifrit, which I've been discussing with Ahmed. Ahmed knows it. He's a very close. Come here, Ahmed. Come here. He's a close friend of mine. He's a buddy, and I've known him for years. We've been partying in Dubai together, and I share Islamic party. Islamic party. A very decent, good Islamic party. So I share every bit of my upcoming project or upcoming experiences with him. मैं तहे दिल से सब कुछ शेयर करती हूँ। हम लोग अपने point of view शेयर करते हैं. We both know the insides of ourselves, which nobody knows. You know, and of course his friend, I've met him also. So it's really thrilling कि you share a family in UAE, in Dubai, somebody like family, and then you meet him again in Mumbai, and something good is happening in his life. On October is a special month for him, so I'm so excited and so proud of him. And I'm happy कि अहमद के दिल में ना इंडियन सिनेमा के लिए इतना प्यार है ना, बचपन से, since childhood, right? Since age of 5. Since age of 5, and he has been the only medium कि कैसे UAE इंडियन सिनेमा से जुड़ा है. All these years, अगर UAE की ऑडियंस, अरबिक ऑडियंस, अमीराती ऑडियंस कभी इंडियन सिनेमा से जुड़ी है तो उसका एक ही मीडियम रहा है, and that is Ahmed. I swear. He's the only medium. He's been promoting Indian cinema, movies, and giving reviews and TV shows and everything. So he is that golden bird which is flying between UAE Connecting the gap between cultures and countries. So we are very proud and privileged that we have him. Thank you so much. Means really a lot. Thank you so much, Bebika. Thank you.
यही शौक है तुम्हारा। देखो शौक की बात की निकालने की बात की। I am very happy that Salman came. Alhamdulillah. I met him in Dubai, Yeah. and he made me dance on his song. And you dance well? Huh? Yeah. I You got did. rhythm. Thank you so much. हाँ. ये बहुत अच्छी हिंदी उर्दू जानते हैं, पता नहीं फारसी जानते हैं कि नहीं, पर हाँ देखो थोड़ा फारसी भी जानते हैं। तो अहमद से मेरी मुलाकात काफ़ी अरसे पहले हुई थी एंड ही इज़ वन ऑफ दोज एंथुजियास्टिक एंड बहुत ही एक दिलचस्प इंसान है जो बहुत प्यार से हमारा वेलकम करते हैं। और मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों ने भी इतने प्यार से इनका वेलकम किया। इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन मुंबई? No, third. Is it third But time? first time in front of beautiful. The first time in front of our media. So our media is the most hands-on media. You will find them everywhere. You know, from the airport. इनके लिए एयरपोर्ट लुक के लिए कोई गया था कि नहीं गया था अभी तक? गए थे नहीं गए थे? अच्छा चलो फिर। That's my birthday gift from you. अभी जब when you go back, these guys are going to be there. Done. तो हम सब की तरफ से welcome to Thank India, you welcome so much. to Now you Mumbai. say something in Arabic, no? أنا ما في معلوم عربي، في معلوم شوية شوية. I will teach them Arabic. Everyone who comes here. That's nice. Okay, do that. सलमान जी लास्ट क्या करेंगे? अक्टूबर में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है सबकी तरफ से। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए और क्या उनसे जानना चाहिए? क्या होने वाला है? What's happening? I don't know there. I don't know. Are you getting married? No, maybe. Maybe. Maybe I'm getting married. Maybe I'm getting married. This will be your first one. And only one. Only one. Only one. Maybe I don't know. Wallah, too much problem. This guy. Too much asking. No, but thank you so much, guys, for coming. It's really No, a pleasure, man. Happy birthday, and may Allah bless you with all the health, happiness, success. Thank you. And again, once again, welcome. You have to come home. Done with chai. Done with chai. With chai. Thank you so much. क्या हाल है आपके? Ahmed, you come, please. I came so much. No, but it's last October again. No, you have to be with me in one frame. Hello. I am firstly so happy and delighted to see Ahmed. And so handsome you're looking, mashallah. Wow. So Coming from here means a lot, by the way, huh? Yeah. From the princess. Aw, so sweet, Ahmed. Seriously, great feeling. And I wish you all the best. I'm seeing your endeavors and mashallah, you're just rocking day by day. So may God bless you more and more. And you're rocking, and please tell them about your new music video. So sweet. Yes, guys. So I have my music video, but ये वाला थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि अभी आपने मुझे सिर्फ बतौर एक्टर और एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट देखा है, बट ये पहली दफ़े जब मैं खुद गाऊंगी और ये मेरी आवाज़ में गाना आ रहा है इंशाल्लाह 10 तारीख को। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, बाकी अहमद तो कर ही रहे हैं। What I'm doing? Nothing. Just give an answer. Thank you so much. Okay, I've heard that she's a good singer. Yeah, I think you can just sing. Oh God! मेरे गाने See, I'm helping you. I am helping you all. Oh, what's happening in October? I don't know. What's happening in October? What's happening in I'm October? getting married, maybe. Oh my God! Are you serious? I don't know. They're giving मैं me बहुत ही ज़्यादा मुंतज़िर हूँ फिर इस चीज़ के लिए। बहरहाल गाने के हवाले से आई थिंक आपको 10 तारीख का वेट करना चाहिए, राइट? शुक्रिया। Thank you so much, Thank you Sana. so much. फोटो है वीडियो? नहीं अभी कोई नहीं आया, चलो नहीं चल रहा।
You will ask for October? Tell them how we met. Bekapo shoot. So I'm in the middle of a shoot and suddenly I see the gentleman taking some video. What's going on? I thought maybe some guests have come. And then Emma came and started interviewing us. But literally, ऐसे हम लोग का like bond हो गया and he's like one of the sweetest guys I've met in a very very long time. The most important thing, respect celebrity. Don't go inside. Ask. Very respectful. No, but you come across as a genuine person, and that's what people like. Okay, people take a lot of interviews, but when a person is genuine and it's like a heartfelt thing. The questions you ask me, very few people ask those questions. Thank you. I will tell you guys one thing about Chetan. When I met him for the first time, I was very afraid. He's like very big, and so I said like, I will not interview this guy. Maybe he will say something that I will feel like awkward. But then we were in the elevator. He said hi. I say okay, he's good, he's cool. But you were very good, mashallah. And you have been. That's what I'm telling you, right? I was telling them that when we first met, like. Normally people take interviews and you don't know what, sometimes they can get rude and all that. But the questions you asked me and all the other people of my crew were so heartfelt and genuine that I think we all made a instant bond and I've been in touch with you since nearly a year now. Almost. More than a year. Yeah, almost a year. And he's such a genuine person. I really love his attitude. He's very cool. We want to see you more. Yeah, of course, man, you will. Something good is coming. Ask him about October. Ask him about October. October में I don't know what's. I don't know. अरे बोल ही दो यार, कुछ तो बोलो. Nothing is. Maybe I'm coming back to Mumbai again to do another thing. Oh, Shadi in Mumbai. Abhi. Shadi in Mumbai I'm doing. Oh wow. Okay. No, thank you so much. Thank you so much for yeah. coming. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you Let's for take calling. pictures. I know. Pictures. Come. Thank you. Yalla, it's your show. Yalla. No, not mine. Come on. Come. Solo picture, let's do. Do solo. Shruti, man, look this side. Smile, please. Hi. I'm on the right. And here. Thank you. Thank you. MashaAllah, looking pretty. All media people, thank you. Habibi, I am in Mumbai. I think at the end, we will do one video with all of you, huh? I will say, you say all Habibi, welcome to Mumbai. Okay. Okay. Call Karo Habibi, मैं आऊँगा. October. First of all, I want to say that Shruti, she have done, I don't know if you guys know, she have done one Arabic show. Yes. And it went so good. People are making reel, making TikTok. I'm not sure how much messages you have got after that. I have got a lot of messages from UAE because people they really love Taranum's part and Indian part in the show. So I really. How does it feel to be connected to Arab region? It feels amazing. I'm really my heart, it gets filled with gratitude every time when I receive love from the audience. And we are about to start season 2 very soon. Are you joking? No, I'm not. So Album season 2 is on Then its way. this is exclusive news. Tell them. Do they know about the show Album? I don't know because Okay, so it was basically, not... Shruti, she have done one Emirati Arabic show. It was based on Abu Dhabi, and she played the role of Tarannum. And the show is completely in Arabic.
only her part was a little bit Arabic English. English, yeah. Yeah, and it was loved by many, and now she's coming with season 2, and I'm so much happy Yes, for that, super and we will excited. have a new content with that. Yeah. And Hiramandi, we have the Hiramandi here. Yeah, thank you very much. Any new news about Hiramandi? Oh, no, that's the car. Soon, very soon. Very Let's hope soon. for the best. But like, you are the host today, so you are the main topic of tonight. You know, I'm What not the main main topic. topic? You are the main host, so I would like to wish him a very happy birthday, and thank you so much for having me here. And Thank I'm you really so grateful much. that we This got is to our meet. token of love from Dubai to all of you, because you guys Thank always you. come to UAE and shine our country. This is my love to you guys. Thank you. Thank So you sweet. so much. Thank you so much. for having Shruti. me. What is next? What is in pipeline? Are you shooting for something? The main thing is just like 6 September ko Darshan Rawal and my song, it is getting released on 6 September. So please watch it and share your love. And I hope aap sabko acha lage. It's a little different, but it's very beautiful. And there are 2 more projects, but we'll talk about it later. But if you get an opportunity for Big Boss, so are you No. going to accept it? I'm not a fit for Big Boss, I think. I don't fit in Big Boss at all. So yeah. Why? Big Boss is not my cup of tea. Something big is coming from inside. You want to know? Huh? What's the big news? We're doing a show together. Yeah, in October. We're doing a show together. We're doing a reel for her music video in October. Why not? Why not? Nice. It's releasing on 6 September, like in 2 days. So you have to make a good reel on it. Done. We will do. I am here till September 8th. We'll do a reel together. Deal. Done. Thank you so very much. Thank you. Bye-bye. ठीक है डालो क्या Thank you, sir. Thank you. All the best. Okay, I have to ask you guys one question about Madhur. What is your best film, Madhur's best film? See, he's seeing every film, huh? He's seeing every film. Huh? Sir, come close. Okay, I'm shy only. I'm tired of talking. No, he will ask you one question. He will ask you what's happening in October. They don't know what's happening in October. No one knows what's happening in October. Come, let's talk. Very good. So much drama. So much drama. Media? So what's happening में in go. October? साथ में ये सोलो बोला ना? We'll come. How are you? Well, good. Thank you for coming. Finally. How was the shoot? Yeah, it was good. It was hectic, but I finally made it. I So was it's very nice. tired. I was How very long tired. the shoot has happened? Too much, no? Okay, so guys, now you ask the question. First of all, you guys tell me how we connected to each other. Okay, so I think after Big Boss, we connected with each other, and it was him only who connected, and he said that I want interviews and just your experience. She was about very genuine in the house, maintained the respect. This is what I love about you. And you also, mashallah, I told you also, such a beautiful human he is, such a beautiful heart, soul, mashallah, you have. I think that was the first interview I gave after that break of 1 Yeah. year. It was the first interview that I gave. That means a lot, thank you. And I still remember when I came last time, she took me to some nice food.
So she have good. Yeah, I couldn't make it then. Yeah. But you made it today. Yeah, I made it today. But thank you so much. Thank you so for say inviting. something good about me, no? Yeah. Make me feel First nice. of all, very very happy birthday, Thank you Ahmad, so and much. we are really enjoying this that you are celebrating your birthday in India. Yeah, exactly. For the With first this beautiful weather. time. And when are we having Yeah. our chai? Our chai now. Yeah, I know. We're having chai. I could really use one. I have a sore throat right now. We're I gonna can- have a chai with Ahmad. We're gonna have a chai literally. with Ahmed, literally. We will all have chai with Ahmed. Yeah, so all of us will have chai. But thank you so much, guys, for coming. And I keep saying that you guys are always shining. And congratulations for your new show Thank that you're you so coming. much. What is next for you? उसके लिए it's like we're gonna take some break. Okay. And then we're gonna talk about it. Done. You guys have your answer. Khalas. Yes. See, I made your life so huge. वो पता चल जाएगा उस टाइम में आने वाला है ना शायद है ना around the corner. Maybe. Soon. October. अब तो मैं बोलती हूँ सी जब लास्ट ईयर ये चीज़ ऑफ़र हुई थी शिजान को दैट टाइम आई वाज रियली स्केयर्ड अबाउट इट एंड मैं नहीं चाहती थी कि शिजान बिग बॉस में जाए बट नाउ आई रियली वॉन्ट माई ब्रदर टू गो इन दैट हाउस बिकॉज नाउ आई नो दैट अभी वो अपने जोन में आ चुका है एंड ही विल गोना बैंग इट आई नो इट He will create drama आई there. नो ना यार मैं जानती हूँ I am drama. Drama. I am drama. See, if he goes to Big Boss, I will go to Big Boss. Whoa! Is that your answer? Well, is there an announcement? I don't know. मैं तो पता नहीं वो definitely जा रहा है. No. चलेगा. Okay, so this is happening in October. Okay. मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मैंने फॉलो किए. भाई इसने बैठा बैठा के मैंने दिखाया बता हमें. दिया कि आई रियली लव दैट शो. तो आई कृष्णा इज समबडी हु इज लाइक वेरी स्ट्रांग. कश्मीर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. तो ये दो हैं जो जिनके स्टंट देखने में मुझे मज़ा आता है. लेकिन इस टाइम के स्टंट हमारे टाइम से ज़्यादा अच्छे हैं. तो वो बहुत ही बड़ा बस होता है कि यार कोई वापस ले जाओ. तब भी वही मतलब ज़्यादा बेटर है. प्लेन वाला ले लो या फिर पानी वाला ले लो. दिव गॉन 1 लेवल अप. तो ये किसी भी शो के लिए बहुत बड़ी बात है टू ईच ईयर गो एक लेवल ऊपर जाना. बट आई फील ड्रॉबैक इज कि वहाँ पे ना ठंड नहीं हाँ है यार, ठंड नहीं है और वो एक आई थिंक खतरों के खिलाड़ी का शायद एक यूएसपी रहता है कि आपको ठंड के अंदर पानी के अंदर जाके परफॉर्म करना. सो दैट्स चैलेंजिंग आई थिंक. वो इस बार नहीं चीज़ है. इस बार नहीं है और इस बार शायद इस वजह से आई एम नॉट गोना से कि इजी हो गया है बट हाँ थोड़ा सा वो हो गया है क्योंकि बेटर हो गया है. क्योंकि हमें पता होता था कि 10 सेकंड ही है तब तक आपके हाथ पांव काम करेंगे फिर जम जाते थे. हमारे हाथ हिलते नहीं थे पानी की ठंड की वजह से. तो वो चीज़ इस बार ये लोग बच गए करने से. कंटेस्टेंट वर लकी इनफ. लकी कंटेस्टेंट वेरी लकी. आपने कहा कि आप खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आसिफ का एक इंसिडेंट हो गया था और ईशा के साथ किसी के साथ वो किस हद तक सही था आपको क्या लगता है? यार इंसान के मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसके लिए कुछ करते हैं. जब हम अपने आप को किसी चीज़ से ऊपर समझने लगते हैं तो फिर दैट्स हाउ वी रिएक्ट. तो जिसके लिए जो चीज़ बड़ी उसने वैसा रिएक्ट किया. I think this season Khatro is Big Boss. Yeah, you're very true, very true. That's Big Boss. right actually. Outdoor version, I would say. Activity version. Activity version. Yeah, that's actually right. Very interesting. Thank you so much. Thank you. So much. Is she doing the same thing? Would she do Mashallah, mashallah. What happened? Nothing. So I met them like 2 hours before at the office. Yeah. What happened to you? No, not at my office, but at some. Oh, by the way, she's coming up with beautiful projects, so congratulations to her. I'm so happy. He's my brother from another mother. Yes, كيف حالك? Everything is only كيف حالك. But today I will teach you one new Arabic word. Okay. Okay. So
Yeah. Okay. How does she look today? Mashallah, beautiful. See in Hindi. खूबसूरत. What's खूबसूरत in Arabic? नहीं. Means Jamila. Oh yeah, you taught me this. Jamila. Yes, you taught me this. Sana is Jamila. But thank you so much, Sana, for coming. How we met? अभी handsome को क्या बोलेंगे अरबिक में? हाँ, handsome. You guys use it also here. अब तुम ही बता दो, हमको तो अरबी नहीं आती. Wasim means handsome. Wasim. Wasim. Why Wasim like that? Wasim. But Samasha, you're looking very beautiful. Say Jamila. Okay, thank you. You're looking Jamila, mashallah. Thank you. But congratulations for Big Boss winning that. And see there are so many people who win Big Boss and they little bit become nakra attitude. But she is the same girl that I know. I think he knows her. me before and after winning also you know me. And I was very sad when so many people told you in the show that you're fake. But you are like that. I know it since before Big Boss. Who cares? She is like that. Who cares? I have the trophy with me. Who cares? Because of Nidhi. No, I think it was a team this and it was everybody. The whole जनता ने मुझे प्यार दिया. I was not sure whether people know me outside. You know me. Before going, I was very like this कि हाँ, I mean जब मैं जा रही थी मेरी इससे conversation हुई थी ना, I told him, I said I'm going. I never had that confidence कि मुझे इतने लोग पसंद करेंगे या लोग मुझे जानते भी होंगे. But and I told her, will you pull it? Will you do something good? She was like, I will come and I will win the show. I have that see, attitude. I'm a leader. Then I was like, okay, nice, good luck. And she killed it. I have one picture of yours. You're sleeping. I will show you after that picture. बात अलग, पर जो लोग अभी भी प्यार कर रहे हैं, बिग बॉस हुए काफी दिन हो गया, फिर भी आपको लगातार प्यार मिल रहा है. टी सीरीज में आप हाल ही में स्पॉट हुई हैं, तो क्या कुछ अपकमिंग है, क्या नया है? सिर्फ प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए और मैं बोलूँगी कि प्यार बढ़ते रहना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक आई एम हियर टू एंटरटेन एवरीबॉडी एज एन एक्टर. एंड जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार किया, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कोई नई नई चीज़ें देती रहूँ. कि उनका प्यार मेरे पे बरकरार बोलते ना, वो रहे हमेशा के लिए. सो बिग बॉस वाज जस्ट द बिगिनिंग एंड आई थिंक देयर आर एक्साइटिंग way more new things coming up. So I think मेरी जो fans है, मेरी जो जनता है, I think वो सब मुझे पसंद करेंगे. So I'm really looking forward. सना, इनके साथ तो आपका कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, but कटारिया और विशाल की अगर मैं बात करूँ तो इनके साथ कब देखने मिल सकता है? बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप सबको पता चलेगा. So I think I cannot talk right now, but yeah. सना जी, इस बार का बिग बॉस काफी ज्यादा हिट हो चुका था और इस बार के बिग बॉस में काफी तकरार भी हुई थी और कुछ लोग बाहर आकर भी उस तकरार के बारे में बात करते थे जो अभी भी बरकरार है. तो उस मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके साथ किसी यार मेरे लिए मैंने ना जब शो ख़त्म हुआ था तो आई ऑलवेज केप्ट इट लाइक दैट, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स. अब लोग कुछ क्या बोले फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक शो के अंदर भी मुझे बोलते थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. शो के बाहर भी कुछ बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी आई वुड से दैट कि विजेता अनाउंस हो गया है. अब डिज़र्विंग अनडिज़र्विंग के बारे में आप बात मत करें. समबडी लाइक मैं ट्रॉफी लेके निकल गई है ना, आई एम पास, लाइक मैं आगे बढ़ चुकी हूँ. तो आई थिंक हम पीछे नहीं रहते, लेट्स ऑल मूव ऑन. सो या सना, सबके साथ तो नाम आ रहा है, नेजी के साथ प्रोजेक्ट कब आने वाला है? नेजी अभी इन प्रोसेस मेरे लिए गाना लिख रहा है. स्पेशल सॉन्ग हो रहे हो? मैंने नेजी को बोला था, मैं कहा मेरे लिए तो स्पेशली गाना लिखेगा. सो आई थिंक ही इज़ इन दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग द सॉन्ग फॉर मी. सो ही विल मीट मी विद द सॉन्ग. आपकी शादी इस साल देखने वाले हैं? या अल्लाह. नो कमेंट्स. या अल्लाह. हाँ हो रही है, हाँ एक्चुअली हो रही है. हाँ मुझे क्या कहना चाहूँगी, कितने एक्साइटेड हो आप? कुछ नहीं, आई थिंक उन्होंने पहले भी बोला था दैट ही इज़ गोना गेट मैरिड दिस ईयर एंड या सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज वेडिंग. प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि सना की तो प्रिपरेशन चल रही है, संगीत के लिए भी कुछ प्रिपरेशन चल रही है. आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तो कोई प्रिपरेशन अभी तक चल नहीं रही है, बट या आई मीन मैं शादी में तो ज़रूर जाऊंगी, बट लेट्स सी. थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू.